Okay, thank you. Great. So, Abhijit, just to start off, I believe that you're doing your design program at World University of Design, Yeah, WU, right, right. and you're presently in which year at I'm in third year. third Like on year? this November, I would be going back to my home. So your Like my program is your program is my for of 4 years, but basically on the last semester we have a graduation project, so it's like oh, from November my placement will start basically. wonderful, wonderful. And I also saw that you're pretty keen on game development, interactive design, those kind of areas, right? Yeah, I have a lot of interest in that. Right. Good. So that is what I call the future of entertainment in this world at the moment. But I think the vacancies are not that much. Because it's like I was going through online, like I was finding internship for me as well. So I was going through online and everything. Like the vacancies of graphic designers are more as compared to the vacancies for animation and game designers. That's the condition here in India because in India, of late, we've started to realize that gaming probably is a serious culture and it has to be taken seriously. So now this year, the Asiad Games, in fact, is considering gaming as one of the competitions. So this is the first time ever in the history of Asia that we are considering esports as one of the uh, features. So with that, the movement will, obviously gather some pace. But then, obviously, if you compare it with other countries, we are not that fast. Yeah, true. हमारे यहाँ तो अभी भी गेमिंग एक वेस्ट ऑफ टाइम ही मानी जाती है ना तो कैसे होगा तो वो वाली चीज है एंड one thing is good that you have a 4 year program because if you plan to apply to United States or say Canada these kind of countries you require a 4 year education तो तुम वहां पर तो बहुत सिक्योर हो गए one more thing what about your CGPA and stuff Like in this first semester, overall or it's like in 10th, 12th, you're asking or no no what? no no. The last 3 years 2 years of your graduation This like my CGPA was 7.5 something. 7.5 oh, I think Madhukar Does Mittal the marks matter in designing? I don't think so. The marks, I think the portfolio speaks for you rather than the uh, marks. the It's like problem that. is the problem is that there are certain universities which are pretty good. They look at your overall GPA, plus they look at your portfolio. Because the input of the program, the curriculum, requires you to know certain things in depth. And obviously, Okay. a way to judge the student is to look at the GPA. So I think Mr. Mittal has also joined, but Yeah. probably his audio is not working. So how do we go about it? I think that's your I dad, think I right? will tell my dad he has to press that audio option downstairs. Yeah, now I'm audible. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now you're audible. Thank Yeah. you. Okay. So what I'll do is I'll just give you a little idea about certain programs which I've already checked. Hmm. Okay. Hmm. Have you heard of Rochester Institute of Technology? No, I didn't look for any colleges for MBA. Universities? Okay. Okay. I didn't Great. look for any colleges in university. Then I'll show you the universities. I've made a research sheet kind of. Okay. Mm. Here you are. So if you look at Rochester, the first one, it is Mm. MSc Game Design and Development. And Like, Rochester, can I get to know what all software do they use? Can I get to know about that yeah. as well? So that you'll have to go through the curriculum of the program. Okay, okay, So majorly okay, VFX, is something that they're using. Apart from that, there are many other terminologies which I will not be able to understand, of okay. course, because I did not Mm. come from that same I background, get it. I get it. right? Yeah. So you'll have to look at the program and then you'll have to Mm. understand that, what are the Okay, components that they're doing. okay, cool. So once we start working together, I Mm-hmm. will be sharing this sheet with you. This sheet, Mm-hmm. as you can see, has the course links, has the tuition fee, all the conditions that are required. As you can see, I've mentioned here the portfolio requirements and the deadlines also. So this is a comprehensive sheet. This has all the information required. And I've Mm-hmm. looked at 4 or 5 universities which are known to be top-notch universities in United States for this particular area. So for example, you can look at SCAD. So Savannah को हम SCAD बोलते हैं. SCAD is Savannah College of Art and Design. Mm-hmm. And it is world number 26 in terms of QS ranking.
So it has a program called Masters in Interactive Design and Game Development. Exactly the thing that you are looking for. Okay? But I think like VFX, I'm not into VFX. I'm basically a 3D modeler. So basically we use Unreal So for. yeah, so 3D model is also something that is inclusive part of the program. Okay. Okay. So actually it is not very restrictive, you know. These are all umbrella programs. They are very open programs. So you can suit your choices and you can go, you know, the way you want. So you can see that I have mentioned all the expense side also, but then look at this, the condition. So what they're saying is that major is specific portfolio. And when they say major specific portfolio, that means round about 20 pieces, which is inclusive of 2D, 3D. You can also include a few models. You can do a caricature, or probably you can code and give them games also. Okay, 20, 22, 0. 20 pieces. That is a bare minimum requirement for any university across the world. 20 is a bare minimum requirement. और एक और चीज मैं आपको टिप दे देता हूँ. You know, somehow design courses have been something that I have been very lucky with. So over the years, I have sent a lot of students to top-notch universities across the world. Every year, around 2 or 3 people at top-notch universities, and all my students have always gone through with scholarship. हमेशा डिजाइन प्रोग्राम में हमारा स्कॉलरशिप एकदम फिक्स हमारे बच्चों को आया ही आया है. तो एक मैं आपको टिप देता हूँ कि जब आप पोर्टफोलियो बनाना शुरू करेंगे ना, what you need to do is just make a time lapse video of you starting a project and ending it. Okay? The way you think, the way you do your rough work, the way you do your planning, and the way you go about it. ठीक है, कहाँ तुम इरेजर यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है, and the way you end it, the ending piece. So if you can start from the scratch and go to the ending piece, and throughout that timeline you can show your movement, the way you express yourself, that gives them a real perspective about you. तुम कैसे सोचते हो, किस तरह के इंसान हो, तुम्हारे काम करने का तरीका क्या है, ये उनको बहुत कीनली उनको पता करना होता है. अब पोर्टफोलियो में ना वो बात जाहिर होती नहीं. Nowadays what people are doing is sending them time lapse videos. Okay. So that is a good way of showing it. Then probably you can also look at this university, University of Southern California, USC. This is one of the top-notch universities. They have a program in game development, MSc game development. So particularly for game development, they're ranked 46 in the world. And yeah, so here you see that they require 3 core courses in grad. 3 core courses means they have a list of courses out of which you should have studied 3 papers. So once you look at the link, then probably you'll be able to see that what are those papers. It includes subjects like algorithms. It includes subjects like, computer coding. And it also includes subjects like 3D modeling, graphics, animation, multimedia, and those sort of papers. So you might find out 3 papers for yourself. Then, Michigan State University. That's a state university. They have a particular program which might be a little different. It is MA Media and Information, but it has a lot to do with entertainment and gaming. Okay? So again, the requirement is pretty clear. Here what they're asking is a portfolio and 3 recommendations. अब इस पे देखो आप 3 GPA देख रहे हो ना. Next one, 3 GPA portfolio plus 3 letters of recommendation. This is UC Santa Barbara, University of California, Santa Barbara. So they have a program which is MS in Media Arts and Technology, again to do a lot with gaming. But then here they are saying that 3 out of 4, matlab, almost say 75% marks. Okay, so you are close by. Okay. And then you have the most proficient Utah. So Utah Institute of Technology, they have a program which is Master of Entertainment Arts and Engineering. These are sort of variety of programs. It is all of them are gaming programs, but they have very different names and very different curriculums, in fact. So the modus operandi are different. Again, you can look at this one. They're saying art portfolio and code samples. That means this is a highly coding oriented program.
Mm. So that is why they are requiring code samples also. So if you've created certain codes for gaming, you might have to share them. Mhm. So ये जो सारी sharing है US universities की, this happens through slide share. So if you have not used slide share, you might have to have a look at it as to how things are being shared. Mhm. So that is how it is. And whenever you're sharing a video, make sure it is 16 into 3, 16 is to 3 screen ratio. Mhm. Okay, so that is how it goes. There is no GMAT requirement for any of these universities. Mm. No GRE, no GMAT. Okay? ये भी शायद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन था कि GMAT का रिक्वायरमेंट है या नहीं है. So there is no हाँ. GMAT requirement. Probably your dad had this question in his mind. तो GMAT का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता. डिजाइन प्रोग्राम्स में ना आप भी बिल्कुल सही कह रहे थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पोर्टफोलियो. Portfolio. Some places they might look at your academic scores, Mhm. and rest of all it depends on how you face your interviews or how you send your motivation videos. Acha, apart from your portfolio, you'll also have to send a recorded video of you introducing yourself. Okay. Okay? And also when you're designing your portfolio, make sure that you are giving them literature in detail. Let's say आपका कोई एक आर्ट पीस है, you don't have to think from their perspective कि वो क्या ढूंढ रहे हैं. आपने क्या सोचकर ये बनाया ना, या उसमें क्या कैरेक्टर्स है और क्या आप बताना चाह रहे हो, आपको वो बताना है इन वेरी क्रिस्प वर्ड्स. सो अगर आप ये सोचने लग जाओगे ना कि वो क्या चाहते हैं तो मैं वो बनाऊंगा, तो हर Mhm. बच्चा ना सेम ही चीज बना के भेजेगा वहां पर. Mhm. So that doesn't work. They want to look at different perspectives. Mhm. आप कैसे सोचते हो, that is far more important. Okay. So when you go to the websites of these universities, you'll be able to see the portfolio requirement pages also, where Okay. almost every one of them have Mm. uploaded certain videos of their students or from Mhm. their faculties describing what is the requirement in the portfolio. Okay. You must see them before you start Mhm. working on your portfolio. Okay? So that Okay. is how it works. So these are some of the universities. There are other countries, there are other universities also that might be looked at. Okay. Okay. Any other questions that both of you might have? Please go ahead. Questions. So it's like if by chance after my graduation, then if I do this freelancing and all, does MBA matters? The masters matter, sorry. MBA. Does it Yes, it matters? does. It does because till date the program that you're doing Mm-hmm. has a lot of offerings. It is not kind of super specialized towards one thing. Mm-hmm. So once you start doing a master's program, and that too, if you are doing it in a technological oriented country, what happens is that with your art skill, you also develop the skill of technology. And today, if you look at the world of design, it requires immense sense of technological areas, Mm-hmm. right? So when you look at universities like University of Maryland, which Mm-hmm. is next door neighbor to EA Sports and Microsoft. Mm-hmm. So if you go there, you'll see that उनका bug identifying technology हमसे लाख गुना better. पर Mm-hmm. मिनट हजारों बग्स वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या वो उसको डिस्कवर कर रहे हैं, उनके साथ यूजेज क्या है. इट इज वेरी डिफरेंट द वे दे आर ट्रीटिंग. So that is there. Plus, masters shows your dedication towards the skill. That is also very, very important. But yes, of course, work experience in itself has a huge, Okay. appreciation across the world. If you can start doing some freelancing immediately after college, and then probably you apply, your chances will obviously get better. But they're not bad as of now as well. So if you've done your internships, if you've done your artworks, if you've done some projects and those kind of stuff, and then probably you should be able to get. And also one more thing, that only the portfolio and only your academic scores may or may not help you to get through, until and unless you are able to showcase कि आप अपने design से दुनिया पर क्या impact कर रहे हो, Mm-hmm. what kind of impactful thinking you have, how can you Mm-hmm. benefit this world by studying design or by inculcating it, is of extreme importance for Okay. Mm. you. Okay? So if you can work on certain projects which help mankind,
Makes a lot of sense. For example, a game that helps somebody develop their speech. जैसे आपको पता है कई बच्चे स्ट्रगल करते हैं, तो Right. अगर if you can develop a game that can help strutters to talk just like us, then you've made a huge impact. Mhm. Or people have not ever thought about, uh, there are kids who love to play games but they have lost their vision, or they cannot see probably. What about them? Nobody has given a thought in the gaming industry about these kind of things. Probably I cannot hear. What kind of feelings would I have? So those kind of areas need to be explored. Okay. So if you can work on those areas as a super specialized project before you go into a university and you can complete it and you can show the prototype, believe me, your application will stand apart than most of the applicants who apply. Your chances would get better. Mhm. Huh? So those are things that you can try. मधुकर साहब कोई आपका क्वेश्चन होता आप बताएं प्लीज. Sir, first of all, I'm audible. Yes sir, you are audible. Yes, sir. First of all, because if I'm not wrong, you were in GK also with Jitin Chawla. Yes sir, I was. Yeah, basically, Abhijit and his sister Sonakshi Mittal, they came to Jitin Chawla, and at that time also you were counseled them. Okay, is it? Yeah, Great, so that's why fine. So now we are meeting second time. great, So now great. first it was face to face, and second meeting we are doing virtual. Wonderful. So now my concern is here that basically prospects means basically now within a year he will complete his graduation in design. So I would like to know ki what are the prospects means now you have told us these 6 or 7 universities on portfolio. Yeah, yes, I know he is doing hard work and whatever the requirement of portfolio, he would complete the requirement of portfolio. But now I would like to know ki first of all he don't have any experience. Just better to take 2 3 years of experience in design by doing the job, then go for the master. Secondly, just Sir, we have lost you, sir. Madhukar sir, we have lost you. मुझे बोल. Yes sir, yes sir. Now we can hear you. That up So yeah, I've completed my means whatever my question I've completed because it was disconnected in between. Yeah, so You or I have to repeat. I understood your question. So what you're Yeah, trying to ask is that is it better to start with some experience and then get into an MS or a master's program, or yeah, is it better to straight away get into a master's program? yeah, yes, yes. So my answer is pretty simple, sir. If you look at the job scenario in the industry that he's trying to step in, back here in India, the position is not very glorified. So in this scenario, it is better to gain more momentum and more skill by studying at least for 1 to 2 years and then looking at a job market which is far more fertile than what it is in India. Once you've completed a 2 year work experience outside India and then you decide to come back, there will be plenty of opportunities for you. Because at the moment, those people working picked by top-notch companies here in India are not people who are freshers out of college. They are people who have proven their worth on ground. That means they have at least 2 to 3 years of work experience. Okay. So that is where the problem front is that हमें immediately तो काम कोई देगा नहीं. जो देगा वो ऐसा कुछ काम देगा जो आपको बहुत वैल्यू ऐड करेगा. So it is always better that Okay, हम थोड़ा सा पढ़ाई करके अपने आप को और मजबूत कर ले और उस मार्केट में जाए जहां फ्रेशर्स के लिए आसानी से जॉब मिलती है. वहां आप 1 2 साल काम कर okay, लीजिए. फिर उसके बाद आप इंडिया आने की कोशिश कीजिए या आप इंडिया में अपना कुछ भी कर सकते हैं. You might just launch a game yourself, Abhijit. I don't know. And that might be a huge thing to happen, right? Today you see games like, EA Sports. Today you see, GTA and so many others who are doing like
500 million and above, right? So you never know. Tomorrow you get a wonderful idea, you launch the whole thing, and boom, you're there with a new company, right? Okay. So इस समय कोर्स करना बहुत सही वक्त है, बिकॉज मधुकर सर, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था. इस साल एशियाड जो हमारे गेम्स होते हैं ना, एशियाड गेम्स में भी ई स्पोर्ट्स को हिस्सा बनाया गया है. फर्स्ट टाइम एवर एशियाड में ई स्पोर्ट्स उसका एक पार्ट होगा. दिस इज अ ग्रेट न्यू मूवमेंट हियर इन इंडिया, एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ थिंग्स. So right at this juncture, collect technology, learn the skill, and come back to India as soon as possible. जितना जल्दी हो सके आप 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस वहां पर लेकर आप वापस आ जाए. और अगर वहां रुकना चाहते हैं, then it's your call. But at one point of time, you might just be willing to come back, because this country is going to be the largest population using using uh, esports as one of their major entertainment source. This will be the biggest market. In fact, if you look at the growth of esports, Asia Pacific is growing at a rate of 72.8%. It's a $47.8 billion market here in Asia Pacific. So it's a serious business, believe me. Secondly, what about the means now if suppose masters if he will if he would go for the master, then what are the finance part means how much investment is सर there मैं and आपको दिखा देता हूँ, yeah सर मैं आपको yeah दिखा देता हूँ चीज. yeah सर देखिए, अब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा. yeah इसमें जो सबसे पहला यूनिवर्सिटी है ना, दैट इज रोचेस्टर. ये सबसे महंगा यूनिवर्सिटी. दिस okay विल कॉस्ट यू, जो आप, मैं जिस कॉलम पे हूँ, विच इज कॉल्ड सीओए पर एनम. सीओए पर एनम मतलब होता है ट्यूशन एंड लिविंग, दोनों को मैंने ऐड किया है यहाँ. ठीक है. okay So this is okay coming out to be $72,924 per year. okay It is a program for 2 years. Most of the program are for 2 years. और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सारे प्रोग्राम्स हम देख रहे हैं यूएस में, these are all STEM programs. STEM आप लोग समझते होंगे. अभिजीत, do you understand what is STEM? No, sir. So STEM means science, technology, engineering, maths. इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम आप यूएस में करोगे ना, प्रोग्राम खत्म होने के बाद यूएस विल गिव यू अ 3 year ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वीजा. अगर प्रोग्राम स्टेम नहीं हुआ ना, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा. 6 महीने के बाद आपको वापस आना पड़ जाएगा. लेकिन मैंने जानबूझकर वो सारे प्रोग्राम्स निकाले जो सारे प्रोग्राम स्टेम डेजिग्नेटेड प्रोग्राम्स हैं. तो आपको वीजा मिल जाएगा, आप वहां पे आराम से रुक पाएंगे. ठीक है. Mm-hmm. can सेकेंड, you yeah Ritesh sir, can you explain again ki what is this STEM program? स्टेम जैसे कि दुनिया में कई तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं. Yeah तो यूएस ने क्या किया है, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है. एक yeah बोलते हैं स्टेम प्रोग्राम, यानी कि वो प्रोग्राम्स जो कहीं ना कहीं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स के साथ ताल्लुक रखते हैं. और okay दूसरा प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं नॉन स्टेम प्रोग्राम, यानी कि ये ह्यूमैनिटीज वाले प्रोग्राम हो गए, ठीक है, या बिजनेस वाले प्रोग्राम्स हो गए. ठीक है. तो वो प्रोग्राम नॉन स्टेम प्रोग्राम्स होते हैं. उसमें नॉर्मली आपको वीजा नहीं मिलता है, okay पे बैक वीजा नहीं मिलता है. सर हम खर्चे की बात कर रहे थे. yeah दूसरा नंबर 2 यूनिवर्सिटी जो है, दैट इज सवाना. तो yeah सवाना का टोटल खर्चा, यानी कि लिविंग प्लस ट्यूशन, इज yeah $52,000 फॉर okay 1 year, एंड इट इज अ 1 year प्रोग्राम. okay यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया $50,000. सो बेसिकली सर, $49,000 से $52,000 के आसपास का खर्चा मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में होता है, एक्सेप्ट फॉर रोचेस्टर जिसका खर्चा एकदम एक्सीडिंग लिमिट पर है, वो $72,000 है. बाकी okay सारे यूनिवर्सिटीज आप देखेंगे 49, 49, 50, 51 ऐसे ही जाएगा. okay. So, sir, Ritesh sir, one thing ki this whatever the COA you are telling, so this COA we have to means finance. We can get the scholarship there. This finance we 100% we have to give from our side, from our pocket. नहीं नहीं सर, मैंने आज तक मेरे 10 साल के करियर में मैंने जब भी डिजाइन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया है, Hmm. ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्कॉलरशिप नहीं आया. तो स्कॉलरशिप्स तो मुझे लगता है कि जरूर आएगा, बट नो वन कैन गारंटी दैट. और स्कॉलरशिप्स अगर आएगा भी,
तो भी सर जब हम इसको भेजेंगे उस Hmm. साल आपको अपने अकाउंट में 1 साल का पूरा ट्यूशन और पूरा लिविंग एक बार को दिखाना तो जरूर पड़ेगा सर, Okay. इन स्पाइट ऑफ हैविंग द स्कॉलरशिप। पेमेंट आप कम करेंगे लेकिन Hmm. अकाउंट में आप दिखाएंगे पूरा 1 साल का फीस। Okay. उसके नेक्स्ट ईयर से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके नेक्स्ट ईयर Hmm. से आप अकाउंट जीरो भी रखो इसको फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन पहले साल जब हमको वीजा लेना होगा उस साल Hmm. हमको ये पूरा सीओए का जो अमाउंट है पूरा हमको दिखाना Yes, sir. पड़ेगा। Yeah, I know because because his sister she's studying in University of this one Michigan. University of Wisconsin. अच्छा, In विस्कॉन्सिन एंड medicine, मेडिसिन। yeah, वाओ। she's in medicine. So we know whatever the rules regulation we know. But now I would like to know ki, what are the means basically expenses. First of all, whatever the statement, financial statement show, we will show. That is not the issue. Issue is that basically now his sister she's getting the scholarship. So now she is getting the scholarship, and she told Papa, I will do my finance myself. So she is trying. For first year, she got the fees exempted. Second year, she is trying to finance herself. So वाओ। now in this case, I would like to know ki if he would go for the masters, then easily if by doing the hard work, whether he would get the scholarship or not, or 100% we have to give from our pocket. नो सर, मेजरली देखिए आई कैन नॉट गारंटी दिस, बट चांसेस ऑफ गेटिंग अ स्कॉलरशिप फॉर डिजाइन प्रोग्राम्स इज वेरी वेरी हाई, although it may not be 100%, but up to a certain percentage we can definitely get. Plus, just like your daughter, he will also have part-time work opportunities. Plus, as he is into design, so the work load or the amount of opportunity that you have in US is humongous. So he can just sit back in his hostel without going anywhere, and he can work from there, from his dorm, okay, and thereby earn a lot of money per hour. And let's say 6 months or later, if you're doing decent amount of work, you might just land up with a part-time internship as well along with your college. Okay. So that ways you can earn. There are opportunities for getting scholarships. Okay. But it is not something which is not fixated. Sir, how do they give a scholarship? Like they see us Looking at your artwork. Looking at your artwork. unique तुम कितना portfolio. ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, तुम कितना उनकी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाओगे, तुम वहां के स्टूडेंट्स में कितना कंट्रीब्यूट कर पाओगे, ये देख करके वो स्कॉलरशिप देते हैं। Okay. So that is how it works. Sir, any other But questions that you yeah, have? my concern is basically just whatever 6 or 7 universities you have told. All these universities are US. Hmm. So now, if in design, which one is best country to join? So देखिए, rather than the best country, let us look at what are the best universities and where are they located. Okay. Okay, So if you look at it, Parsons is world number one for design. But Parsons के पास ना गेम डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं। सेकेंड इज स्कैड, ओके, जो सोच सवाना था, सवाना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन. देन यू हैव रोचेस्टर, ओके, देन you have this university which is FIT, Fashion Institute of Technology, and FIDM, Fashion Institute of Design and Management. so These are all, Indian universities, they are in top. no, these are all US universities, sir. Okay, okay, These okay, are all US universities. उसके बाद जिसका नंबर आता है, that is University Arts London, that's in UK. okay, उसके बाद आता है Glasgow School of Art, that's in Scotland. okay. तो ये जो है ना, ये these are 6 or 7 टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, और इसका जो मैक्सिमम है वो यूएस में है, उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज यूके में और एक आध यूनिवर्सिटीज यूरोप में. Okay. So You now, can actually end up applying to all of these universities. Ritesh sir, just my concern is all these universities they require portfolio, they require GMAT. सर एक में भी जीमैट की रिक्वायरमेंट नहीं है. जब आप डिजाइन प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं ना सर, Yeah. जीमैट इज नॉट समथिंग दैट दे लुक.
all they require is a 20-piece, bare minimum 20-piece portfolio. 20 piece. Okay. For placement, actually, we need only 3 to 4, like college, like a professor say, but it's like they need 20, so it's like बाबा यही just सबसे बड़ा double, चैलेंज होता है. triple. ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और तुम्हारा अब पूरा पूरा टाइम ना उसी में इन्वेस्ट होना चाहिए. 20. और उसके लिए इतना टेंशन मत करो, 1 साल का वक्त है हमारे पास, 8 महीने एक हैं साल हमारे में पास, ठीक है. 20 तो बहुत टफ है ना, एक साल में 20 is अरे very tough. आराम से बन जाएगा, 20 पीसेस बन जाएंगे. हमारे पास सितंबर अक्टूबर नवंबर तक का टाइम है, ठीक है. दिसंबर से डेडलाइन आनी शुरू हो जाएगी. हमें उससे पहले अप्लाई करना है, क्योंकि ये ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी है ना, इसमें ना कुछ में प्रायोरिटी एडमिशंस भी होता है. प्रायोरिटी एडमिशन मतलब सितंबर में ही फिनिश हो जाएगा उसका प्रायोरिटी साइकिल, रेगुलर साइकिल होगा. तो हमें कोशिश करना है, जिनका प्रायोरिटी है उनको प्रायोरिटी में अप्लाई करना है, और जिनका राउंड द क्लॉक है, ठीक है, जिनका लिए फर्क नहीं पड़ता कि आप जल्दी करो लेट करो, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, उनको हम प्रॉब्लम बाद में करेंगे. तो आप 20 पीसेस के साथ तो आपको रेडी होना ही पड़ेगा बाय द मंथ ऑफ सितंबर. So Ritesh sir, now because I'm not design person, I don't know much about design, but now just after just I'm listening your conversation. So now Abhijit on one side is telling 3 or 4 points are enough for any Indian university or Indian means just any Indian job. You are telling 20 means points are required. So So 20 now pieces, 20 yeah, pieces 20 of pieces. artwork. Yeah, 20 pieces of artwork are required. Now, my concern is basically, can it be possible for Abhijit to go for the 20 pieces of artwork? Very easily. Yeah. Most of my people who are applying for design courses, in fact, let me tell you that I have students who are doing their +2 at the moment, and they are applying for several design programs. Okay. So right when we are talking here, one of my students has bagged 3 offers in United States this year, all for design programs. Okay. Okay. And that includes Parsons, that includes SCAD, which is Savannah, and one more university. So 2 of them are in US and one is in UK. And for each one of them, she did 20 pieces, 25 pieces. Okay. So हमने एक 25 पीस का पूरा पोर्टफोलियो बनाया था. कहीं पर 20 पीस चाहिए था, हमने वहां 20 भेजा. कहीं पर 5 चाहिए था, वहां 5 भेजा. कहीं 15 चाहिए था, वहां 15. तो 20 पीसेस जब एक स्कूल गोइंग किड कर सकता है, ये तो ऑलरेडी डिजाइन स्कूल में है, Hmm. तो इनके लिए कौन सा मुसीबत है. आप सोच कर देखो अभिजीत, क्लास वर्क में, प्रोजेक्ट वर्क में आपने बहुत कुछ बनाया होगा, राइट. उन मतलब वो पीसेस, होता है ना, पोर्टफोलियो में एकदम बेस्ट होता है, तो इट्स लाइक अरे नहीं नहीं वो नहीं इतनी नहीं 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 आसानी नहीं. से नहीं बनता. ऐसा ऐसे करके अपने आप को फसाद में मत डालो. आप सारा बेस्टम बेस्ट नहीं बेचते हो उसमें. आप कुछ ऐसा भी बेचते हो जहां पर आप इम्प्रूवमेंट शोकेस कर सकते हो. बेसिकली द पाथ, मतलब जहाँ से यस. मैंने शुरू किया है मैं. हाँ, जहां से शुरू किया और जहां तक पहुंचे, वो जर्नी दिखाओ ना उनको. समझ रहे हो. सो ऑल ऑफ देम नीड नॉट बी द बेस्ट मास्टरपीसेस दैट यू हैव एवर क्रिएटेड इन योर लाइफ. मास्टरपीस तो एक ही होगा ना. हम्म. right? लेकिन जर्नी तो होगी ना. दिखाएंगे ना हमने कैसे सीखना शुरू किया, कैसे कहाँ तक हम आगे पहुंचे, एंड एवरीथिंग एल्स. दैट इज हाउ इट वर्क्स. Yeah, Ritesh sir, इसमें एक पॉइंट और है कि नाउ इस एकेडमिक इन एकेडमिक जस्ट इज टेलिंग इज गेटिंग 7.5, इसका 7.5 CGPA चल रहा है अभी डिजाइन में. और इसका 10th में आई थिंक ही गॉट ऑलमोस्ट 8 CGPA in 10th. Then 12th also he got I think what 80%, almost 80% he got 12th. And now design also, it's a 7.5 CGPA, whatever he's telling. So now is academic is okay for going to the top notch university for doing masters? हाँ मधुकर सर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. Yeah, जब आप डिजाइन प्रोग्राम्स अप्लाई करते हैं ना सर, yeah. ये सब बातें बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखती कि आपका स्कोर क्या है एंड ऑल दैट. हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज में 3 out of 4 जीपीए मांगते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी है. सो वी आर गुड टू गो सर. मतलब मार्क्स जैसे हैं हमारे पास. और दूसरी बात, 10th 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है अभी. अभी जो इंपॉर्टेंट होंगे वो होंगे इसके लास्ट 4 years ऑफ ग्रेजुएशन. सो लास्ट 3 years, अभी तो हम थर्ड ईयर में है, तो लास्ट 3 years ऑफ आवर ग्रेजुएशन इज इम्पोर्टेंट. उसमें जो हमारा मार्क्स है, वी आर अप टू द मार्क. नथिंग टू वरी. वी आर नॉट वेरी हाई, वी आर नॉट लो. वी आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन टारगेट.
तो विद दिस वी कैन अप्लाई, लेकिन याद रखिएगा पोर्टफोलियो का जो वेटेज है वो राउंड अबाउट 70% है, अकेडमिक का वेटेज इज 20%, रिमेनिंग जो 10% है वो रिकमेंडेशंस और आपके एसेज जो आप लिखेंगे उनका वेटेज होता है। तो इस तरीके से वेटेज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके ओके। और सर यहाँ पे व्हाट्स, अगर इफ वी वुड अटैच विद द पैथम, तो नाउ व्हाट पैथम विल हेल्प फॉर गेटिंग द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड? Sir, the way we work is that first of all, I will give him a mentor जो इनको एडवाइजरी देंगे पोर्टफोलियो में करना क्या है, which I think that is pretty important, right? Very So you will have somebody with whom you can discuss कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, He तुम will be क्या, of my field only or what? He will be from my field only or probably like he's an engineer, but he's helping students to get into top universities for almost 20 years of his life. Okay? So he understands that process very nicely. Okay? So that is one. तो आपको ना डिस्कशन पॉइंट के लिए एक इंसान मिल जाएगा जिसके साथ आप बैठ कर डिस्कस कर सकते हो, आइडिएट कर सकते हो, एंड देन यू कैन गो ऑन एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशन तो भाई हम में से कोई नहीं कर पाएगा, वो तो आप ही को करना है। Hmm. सेकेंड पॉइंट होता है फिगरिंग आउट द यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, जो यूनिवर्सिटीज में जहां पर ये प्रोग्राम अच्छा होता है, ठीक है, वो प्रोग्राम्स ढूंढ कर निकालना मेरा काम है। अभी मैं आपकी शीट पर जब मैं दोपहर को काम कर रहा था, तो मैंने यूएस पहले किया, अब मैं कनाडा पे काम करूंगा, उसके बाद मैं यूके में काम करूंगा, फिर ऑस्ट्रेलिया पे काम करूंगा। तो मैं पूरी शीट बनाऊंगा, फिर मैं वो शीट आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर आप लोग सब मिलकर के डिसाइड करोगे कि कौन सी कंट्रीज और कितने यूनिवर्सिटीज आपको अप्लाई Hmm. करना है। वंस दैट इज डन, देन हमारा काम है आपको ये बताना कि पोर्टफोलियो के अलावा और क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। कहीं क्योंकि ज्यादातर जगहों पर रेज्यूमे चाहिए होता है, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है, कहीं पर 3 रिकमेंडेशन, कहीं पे 2 रिकमेंडेशन चाहिए होता है, कहीं पर एक रिकमेंडेशन टीचर का चाहिए, कहीं पर एक रिकमेंडेशन इंडस्ट्री से चाहिए। तो ये सारी बातें कैसे करनी है, कहाँ से लाना है, ये सब बताना हमारा काम है। वंस ऑल दैट डॉक्यूमेंटेशन इज डन, उसके बाद कुछ एसेज होते हैं जो आपने लिखने हैं। उन एसेज को कैसे लिखना है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये हम पहले आपको समझाएंगे, फिर आप उसको लिखेंगे, फिर हम उसको एडिट करेंगे, फिर हम उसको अपलोड करेंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स और काफी लेंथी होता है, उसको फिल करने का काम हमारा है। तो वी विल गेट इट डन ऑन आवर ओन। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एसेज और पोर्टफोलियो पे काम करना है बस। उसके बाद आता है स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस। अगर कहीं पर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन करना है स्कॉलरशिप का, तो वो हम करेंगे, एसेज आप लिखेंगे अगेन। फाइनली जब ऑफर आ जाएगा, तब हम आपके साथ होंगे डिसाइड करने में कि कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है। और उसके बाद होता है वीजा। तो वीजा में हम आपको गाइडेंस देंगे, वीजा का फॉर्म आप भरेंगे, हमारे सामने बैठकर भरेंगे, लेकिन हम भरवाएंगे। दैट इज हाउ द एंटायर प्रोसेस विल वर्क। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स इट। मधुकर सर, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। Yeah, and what are the fees, total fees? सर, हम 5 बेयर मिनिमम यूनिवर्सिटीज का काम करते हैं, उससे नीचे नहीं करते। तो 5 अगर आप करते हो, दैट इज 60,000 रुपीज। Total, और yeah, नहीं नहीं सर, whatever, नहीं नहीं सर, whatever ये you सिर्फ need to, yeah, tell एप्लीकेशन की me. फीस है। Okay, और जो इसका पोर्टफोलियो एडवाइजरी है, yeah. या जो हमें और चीजें इसके कैरेक्टर में चाहिए, इसके रेज्यूमे में चाहिए, ठीक है। Yes, sir, can you wait for 2 minutes? हाँ हाँ, Just श्योर। some mobile, important mobile has come. ठीक ठीक Just ठीक wait ठीक for 2 minutes. Yeah, yeah. ठीक है। Abhijit, Abhijit, जब तक you will Hmm. continue. I'm joining in 2 minutes. नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज। Sir, अब game development, I think you think that I'm a coder or something, but नो I'm नो not नो 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 actually. नो नो, नॉट रियली। आई एम वेरी Okay. वेरी ओपन एंड यू नो आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट थिंग्स। देखो, मेरे को ये So, चीज समझ में आता है कि एक फसेट या एक सेक्ट होता है जो गेम की कोडिंग करेगा, हाँ, एक सेक्ट होता है जो गेम की स्टोरी बनाएगा, हाँ, और एक सेक्ट होता है जो उसका मल्टीमीडिया एनिमेशन और उसका जो फॉर्मेशन है, environment है। एनवायरमेंट है, वो डिजाइन करेगा। एक और सेक्ट है जो यूजर एक्सपीरियंस को डेवलप करेगा, है ना। तो Mhm. मेजरली ये 4-5 सेगमेंट मिलकर के पूरा गेम का एनवायरमेंट बनता है या गेम का बिजनेस बनता है। Right. तो दैट इज हाउ, सो यू माइट बी जस्ट हैंडलिंग वन पार्ट ऑफ इट। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा
जिसको 2 या 3 मीडियम्स हैंडल करने आते हैं, नहीं कर पाएगा। कोई एक ही हैंडल कर सकता है। कोडिंग प्लस एनिमेशन वाला कर पाएगा, वो शायद प्रोबब्ली टॉप ऑफ द लाइन बॉस होगा, है ना? क्योंकि वो फिर खुद कुछ नहीं करेगा फिर, क्योंकि उसे ऑलरेडी सारा गेम आता है। अब वो सामने वाले से करवाएगा, है ना, क्योंकि उसको दोनों एंड मैनेज करना आता है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। तो वो वाला टॉप लेवल मैनेजरियल होगा। सेकंड लेवल हो जाए जो एग्जीक्यूटिव्स है, सीनियर लेवल ऑफिसर्स है, वो अपने अपने सेगमेंट में सुपर स्पेशलाइज्ड, है ना। और थर्ड लेवल होता है जैसे हमारे जैसे लोग हैं, who can develop the business। जैसे फॉर एग्जांपल ईए स्पोर्ट्स का फीफा एक दिन में फीफा नहीं बनाया, ठीक है, मतलब हजारों आवर्स ऑफ सेल्स पिच गई है, और बहुत सारा उसके पीछे प्रमोशन हुआ है, प्लानिंग हुई है। अब ईए स्पोर्ट्स है आज। So you require all facets of people who understand the art involved in it and are able to appreciate the skill of everybody। वो वाला चीज। और बताओ। Yeah, yes, sir. यस I've सर। joined. हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था कि 60,000 रुपीज तो एप्लीकेशन का, और जो इसका प्रोफाइल एडवाइजरी है, जहां पर मैं इससे कुछ इंटर्नशिप्स कराऊंगा और मैं इससे कुछ कम्युनिटी सर्विस भी कराऊंगा, और प्लस मैं इसके पोर्टफोलियो का एडवाइजरी भी दूंगा, उसकी फीस है 45,000। तो टोटल मिलाकर इट इज 1,05,000। ठीक है, एंड दिस इज टिल द एंड ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस। Okay. And you will give some surety also? नहीं सर, गारंटी तो नहीं दूंगा, क्योंकि Okay. लीगली दैट्स नॉट करेक्ट। बट एक चीज मैं आपको बोल सकता हूँ मधुकर सर, कि आप तो मुझे पहले से जानते ही हो, तो मैं आज तक डिजाइन स्कूल्स में ना, मेरा कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं गया है। जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट लेट मी शो इट टू यू। ठीक है, एक सेकंड। And Abhijit, can you share your design also? Ki what your work is? Just can you share with your Ritesh sir? हाँ And सर, you मैं are just share your design also so that he can guide you in better way. ये देखिए, अब ये देखो, ये अनिका है, ये स्कूल स्टूडेंट है, ऑर्किड स्कूल पुणे में पढ़ती है। आप ऑफर्स देखो इसका, पार्सन्स, प्रैट एंड एसएआईसी। ठीक है, तो दीज आर टॉप ग्रेड इंस्टीट्यूशन, और ये डिजाइन स्कूल में जा रही है, आप नीचे देख सकते हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में जा रही है, कहीं पे ग्राफिक डिजाइन के लिए अप्लाई किया है। She's doing grad or masters only? इज गोइंग फॉर ग्रेड, और उसको तीनों यूनिवर्सिटी से अब तो स्कॉलरशिप भी आया है। एक जगह से 64,000, एक जगह से 68,000, और एक जगह से $40,000। दिस इज पर एनम। दिस इज पर एनम। इट्स अ ह्यूमंगस अमाउंट एक्चुअली। तो ये In what सिचुएशन है। course she's going, by the way? Code. कहीं पर वो उसने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है, कहीं पर उसने ग्राफिक डिजाइन के लिए अप्लाई किया है। आई हैव अनदर गर्ल हु इज गोइंग, शी इज गोइंग फॉर इंटीरियर्स, Okay. इंटीरियर डिजाइन के लिए जा रही है। तो शी इज आल्सो गॉट थ्रू स्कैड, शी इज आल्सो गॉट थ्रू पार्सन्स। पार्सन्स में उसका कोई $90,000 का स्कॉलरशिप है, स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। और प्रैट में भी उसको स्कॉलरशिप है अराउंड अबाउट 60,000, जस्ट लाइक दिस गर्ल अनिका। तो ऐसे Mhm. मिल रहा है बच्चों को, सबको मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। स्कैड में भी पिछले साल मेरे पास एक बच्चा था, माधव, ही गॉट $80,000 एज अ स्कॉलरशिप। तो इशू नहीं है इसमें। मधुकर सर, मैं और कोई चीज आपको बता सकता हूँ? Sir, means now, okay, fine, sir. From my side, it is okay. So let me check with the Abhijit also. And Abhijit, any question from your side? No, no, I don't- no So, question. sir, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ी देर में सर आपको एक ईमेल भेज देता हूँ, इट विल स्टेट कि okay. हम लोग आपके साथ क्या क्या करेंगे, एंड व्हाट आर आवर चार्जेस, बैंक डिटेल्स एक्सेट्रा। तो एक रिटर्न प्रूफ हो जाएगा आपके पास, तो वो आपके पास पड़ा होगा। फिर जैसे आप डिसाइड करेंगे, आप जब भी हमें बताएंगे we are good। ओके, और सर एक और है, जो आपका पियर्सन की बात कर रहे हो, पियर्सन में कितना फीस है करीब? पियर्सन अगर इफ यू वुड सेलेक्ट इन पियर्सन, तो व्हाट्स द फीस स्ट्रक्चर फॉर द पार्सन्स, अच्छा पार्सन्स में, पार्सन पार्सन सर या पार्सन में ना हमारे लिए प्रोग्राम नहीं है सर।
अच्छा, ओके। हमारे लिए प्रोग्राम ही नहीं है। और अगर पार्सन का प्रोग्राम होता तो करीबन 50-60 हजार डॉलर का प्रोग्राम। 75 वाला कौन? 75 वाला कौन? 72? प्रोसेसर। अच्छा, if my wish, if I would say in general, तो यहाँ पे जो आप यूनिवर्सिटीज बता रहे हैं, इस यूनिवर्सिटीज का जैसे रोस्टर्स की रैंकिंग 143 थी, और बाकी तो नाउ दिस रैंकिंग इज नॉट टॉप नॉच रैंकिंग्स जो आपने बताया। सर ये जो रैंकिंग है ना, this हम्म, is this actually should not be considered when you are looking at design schools. ओके, डिजाइन स्कूल्स की ना अपनी अलग रैंकिंग होती है, ठीक है, ये ओके, जनरल रैंकिंग है ओवरऑल उस यूनिवर्सिटी की क्या प्लेसमेंट सिचुएशन है अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन अगर रैंकिंग डिजाइन स्कूल पर से देखेंगे ना, तो बहुत डिफरेंट है उसमें। एक डिफरेंट रैंकिंग सिस्टम आती है विच इज कॉल्ड टाइम्स नाउ, ठीक है। तो मैं आगे मैं आपको ना वो वाली रैंकिंग लगाकर दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि यूएस में इन यूनिवर्सिटीज की क्या पोजिशनिंग है। टाइम्स हाई ओके। कैन चेक दैट। नहीं आप नहीं एक सर, दिन वही बेसिक है कि गूगल पे भी ना, गूगल पर भी आप अगर हम्म, बेसिक सर्च करेंगे कि टॉप बिजनेस स्कूल्स इन हम्म, द वर्ल्ड फॉर गेम डिजाइन, ठीक है, तो आपको यही सारे नाम मिलेंगे। हम्म, अच्छा, ओके, ओके, फाइन, फाइन। तो सर लेट मी डिस्कस विद अभिजीत, और आप एक बार मुझे ईमेल भेजिए। जी, जी, देन जी, then secondly, then if requires, I would like to do for the second discussion. Otherwise, just give me some time. I will check with श्योर Abhijit, श्योर and श्योर, नो वरीज, yeah, yeah, नो वरीज। fine. थैंक Thank यू you. सो मच फॉर योर टाइम Thank सर, you. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू, Thank you. बाय बाय Yeah, अभिजीत। same here. Same. Thank you. Thank you, sir. Thank you.